What's up everyone? This is VJ and आज का सवाल What is act of God? Well, हाल ही में the statement has created ripples in the entire media that the government, especially our finance minister Nirmala Sitharaman, mentioned that the falling of GDP, etc., is an act of God. But is that technically what she said? क्या उसने ये बोला? क्या उन्होंने ये बोलने की कोशिश की कि जो GDP गिरा है और जो इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी है वो भगवान की वजह से है? First of all, let me assure you all that I am neither a right wing guy nor a left wing guy. मेरे को right left से फर्क नहीं पड़ता है, मैं जिंदगी में सीधा चलने वाला हूँ, तो हमें आगे बढ़ने दो. So if you are anyone who is into right wing or left wing, पहली फुर्सत में निकल. but if you want to see something unbiased and if you actually want to know what it is exactly, please continue watching the video. Thank you. So Finance Minister Nirmala Sitharaman had mentioned that something with respect to act of God. So first let us try to understand what is act of God exactly. Now this statement with respect to act of God was already once made by the Finance Minister long back during the month of May in this short particular press conference. Regulatory authorities are given clear picture that they can treat the COVID-19 period as an event where you can invoke the force measure. In other words, they can treat it as an act of God, and to that extent be flexible about the execution of the contract. Wherein she was trying to mention about the changes that were happening in the real estate agency. Now what is act of God exactly? Now in every financial contract ये एक छोटा सा clause होता है जिसको हम लोग बोलते हैं act of God or also sometimes called as force majeure. जहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पार्टी ए होती है और एक पार्टी बी होती है और उनके बीच में XYZ कंडीशंस होते हैं. सो ड्यू टू वॉट एवर इंसिडेंट्स अगर पार्टी ए जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो पार्टी बी जो है इससे कंपनसेशन ले सकता है, इसको पनिश कर सकता है और वॉट एवर XYZ दैट इज रिक्वायर्ड. बट यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज होता है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज फोर्स मेजर, जिसमें आता है कि अगर ड्यू टू सम अनफोर्सीन अनकंट्रोलेबल इवेंट्स सच एज earthquake, climatic changes, tsunami, etc., तो जिसको ना तो पार्टी ए ना तो पार्टी बी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, तो ये कंडीशंस फिलहाल के लिए नल एंड वॉइड हो जाएंगे. एंड इवन इफ द पार्टी ए इज नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल दोज कंडीशंस, पार्टी ए को यहाँ पे कुछ हार्म नहीं किया जाएगा, कुछ उसको पनिश नहीं किया जाएगा, कुछ उसको कंपनसेशन नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि रादर दे विल फाइंड सर्टेन अदर वेज इन ऑर्डर टू मेक गुड फॉर बोथ द पार्टीज. Now, since it is connected with things like tsunami, earthquake, floodings, etc., which are natural disasters, the term given to force majeure is also act of God. And this act of God clause does not only involve these natural disasters, but they also include many man-made calamities such as wars, extended strikes, and as a matter of fact, technical lockdowns. So, with respect to these lockdowns and with respect to the entire lockdown that happened during the previous months, इनके रेफरेंस में ही यहाँ पे एक्ट ऑफ वर्ड जो है उसको यहाँ पे यूज किया गया था. सो पहली बार जब उसको यूज किया गया था यहाँ पे रियल एस्टेट के जितने भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको रिलीज करवाने के लिए बोला गया था कि this entire pandemic scenario, this was during the month of May. If you want, you guys can check out the video that this entire month of May, June, July, etc. are to be treated as act of gods. और यहाँ पे कोई भी पार्टी कुछ कंपनसेट नहीं करके देगा, बल्कि अगर उनका कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर रहेगा वो 6 महीनों के लिए यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएंगे, which was a good thing for all the real estate people who are under certain contracts. Now, what exactly happened was यहाँ पे back in 2017 when the state governments were quite skeptical with respect to signing up for GST, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको भरोसा दिलवाया था कि every state government should sign up for GST and in case of any losses or any shortfalls, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको यहाँ पे पे अप करके देगा करके. नाउ ड्यूरिंग दिस एंटायर पैंडेमिक सिनारियो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स आर आस्किंग फॉर दैट मनी फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट. बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द एंटायर लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ द एंटायर कोविड-19 सिनारियो जो जीएसटी का कलेक्शंस है उतना नहीं हो पाया, विच वाज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ ऑल द शटडाउन ऑफ फैक्ट्रीज, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम फिलहाल आपको पैसे नहीं दे सकते, सो वी नॉट बी एबल टू पे. बट अभी यहाँ पे बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट भड़क चुके हैं कि तुम ऐसे कैसे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. सो रेफरिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज द स्टेटमेंट दैट वाज मेड जहाँ पे बोला गया था कि कोविड-19 कैन बी कंसिडर्ड
as a situation which has act of God, और इस act of God clause के तहत हम आपको पैसे नहीं भी देंगे तो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे sue नहीं कर सकता. So this was nothing with respect to God or divinity. This was completely a very smart and well stated financial clause. But unfortunately the media and everyone was very much enthusiastic to catch this single phrase, act of God, and a lot of targeting videos were made. In fact, unfortunately, many educated politicians, many educated YouTube channels, social media influencers, सभी लोग ने यहाँ पे इस पॉइंट पे धज्जियां उड़ाने की बात की कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कोविड को भगवान का बता रहा है, कोविड को भगवान का क्या करा बता रहा है करके. अब अनफॉर्चुनेटली अगर एक बात बोली जाए तो 10वीं फेल मीम पेज का एडमिन भी इसके ऊपर मीम बना रहा है. Not supporting anyone, but Nirmala Sitharaman is a economics PhD holder from London School of Economics. So, can we seriously think that she can give such a stupid statement, that too in front of the entire country के सामने का press conference? Definitely not. So, unfortunately, it is because of hyping up of wrong things that we tend to misinterpret certain information. Now, once again, यहाँ पे अगर हम लोग इस fact को analyze करने की बात करें तो the central government is urging the state governments to rather take loans from the RBI rather than asking to the central government. Central government ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास फिलहाल पैसे नहीं है, तुम RBI से यहाँ पे लोन ले लो करके. तो अब स्टेट गवर्नमेंट ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, तुम बोलो थे तुमने यहाँ पे पैसे देंगे, अभी तुम पैसे नहीं दिए, अभी तुम बोल रहे कर्जा लो, तो हम बिना वजह कर्जा क्यों करें? So this is what the entire situation that is going around. Now technically the authorities that are concerned, that are responsible, the state financial authorities and the central financial authorities, वो लोग अपने हिसाब से like civilized people discussion कर रहे हैं. But unfortunately अपना जानते थोड़ा ऐसा excitement आ जाता है तो हम लोग beam share करने में busy हैं. So please let us try to understand that media is a very powerful place and it can have its impact in extremely powerful ways. So let us try not to misinterpret any information that comes across and then spread chaos randomly, right? Because a lot of things are already happening everywhere around. अगर इसके ऊपर हम लोग ने और मसाला डाल दिया तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है. See, let me just specify once again, I am neither supporting any political party, neither am I biased with respect to any political party, but it's just that, when information gets misinterpreted and presented in a wrong manner, वो गलत है यहाँ पे. So let us try to understand any statement that comes across over media and let us not randomly, talk mumbo jumbo about it and rather get on to the actual meaning behind it. Now, whether the dropping down of GDP was an act of God, certainly not. And definitely there can be no economical or financial clause that can be added to it. And neither am I trying to support the government's wrong decisions, nor am I trying to support their miscalculations. But this is a simple request as a citizen of the country that let us try not to misinterpret random information that comes from a random meme page done by someone who is once again random. I'll see you guys next time.